Now that we have understood the basic simple logic of DNA recombinant technology, just the basics of it, we go into a beautiful logic called transposons, plasmids, and bacteriophages. How are these used in DNA recombinant technology? So let's see what are transposons, plasmids, and bacteriophages. So, what exactly are transposons? Transposons are sequences of DNA that can move or transpose themselves to new position within the genome of a single cell. They are sequences of DNA that can move. So DNA sequences move and stick or transpose themselves to new position within the genome of a single cell. And these are known as jumping genes. So these are genes which jump from one position to the other. Transposition can create phenotypically significant mutations and the cell's genome size will change. सेल का डीएनए कंटेंट और जीनोम साइज बढ़ जाएगा और phenotypically plant बदल जाएगा. Now, what do you mean by these, sir? Let's understand on the basis of their mechanism, transposons are of two types: retrotransposons and DNA transposons. Retrotransposons copy in two stages. First, from DNA to RNA by transcription, and then from RNA back to DNA by reverse transcription. First, DNA becomes RNA by transcription, and then RNA again becomes DNA by reverse transcription. This DNA copy is then inserted in the new position, which is called copy and paste transposon called retrotransposon. तो ये मेज प्लांट में देखा जाता है. ये है आपका डीएनए और डीएनए के अंदर से होता है ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म एन mRNA, and mRNA undergoes reverse transcription to again form DNA, and this DNA gets attached to another chromosome. तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ये डीएनए अटैच हो जाता है, and this DNA sticks to it with the help of ligase enzyme. And ligase enzyme की मदद से ये डीएनए यहां चिपक जाता है. तो splicing is done by ligase enzyme. So what is this kind of transposon called as? DNA becomes mRNA by transcription, mRNA by reverse transcription, mRNA becomes DNA, and this DNA gets attached with the help of ligase enzyme, and that transposon is called as retrotransposon. It will increase the DNA content of the cell. न्यूक्लियस में डीएनए कंटेंट हो गया क्योंकि वी हैव कॉपीड एंड पेस्टेड. So we have copied from DNA, we did mRNA. From mRNA, we did new DNA, and this new DNA is joined. So this is a phenomenon of copy and paste. It is copy and paste. It is called retrotransposon. And then you have DNA transposons. The second type is called DNA transposon. They do not involve RNA intermediate. An enzyme called transposase makes a staggered cut at the site producing sticky ends, cuts out the transposon, and ligates it into a new position. तो डीएनए ट्रांसपोजोन्स में एक एंजाइम कॉल्ड ट्रांसपोजेस कट करता है at a target site to produce sticky ends, cuts out the transposon and ligates it to a new position. It is cut and paste. So, in a
DNA transposon, there is straight away an enzyme called transposase. It cuts the DNA and DNA को कट कर देगा and DNA को कट करने के बाद it will stick the DNA to a new position. So इस DNA का क्या हुआ? This DNA has lost its fragment. उसका fragment चला गया and that fragment is attached to a new DNA. तो एक नए DNA के ऊपर ये स्प्लाइस किया गया. So here we have done transpose segment with the help of transposase. We have cut and we have paste. So we have cut and paste. So it is called DNA transposon. In retrotransposons, what had we done? We had done DNA transcription, mRNA, reverse transcription, DNA, and we had copied and paste. We had copied and pasted. Here we have done straight away cut, and after cutting we have pasted. So we have cut and we have paste. We have cut and we have paste. That is called DNA transposon. And the first transposons were discovered in maize, Z-maize, by Barbara McClintock, for which she got a Nobel Prize. The first transposons maize में discover किया गया था. About 50% of the total genome of maize consists of transposons. 50% of the DNA of maize is of transposons, and in bacteria, transposons can jump from chromosomal DNA to plasmid DNA and back, allowing transfer and permanent addition of genes such as those encoding for antibiotic resistance. सर ये है बैक्टीरिया और ये है बैक्टीरियल डीएनए, और बैक्टीरियल डीएनए में है प्लाज्मिड, and plasmid में अंदर you have genes for antibiotic resistance. Genes for antibiotic resistance, these genes का cut and paste या copy and paste करके genes are transferred and genes jump from the plasmid to the bacteria. तो बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है. तो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है एंड यू हैव मल्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियल स्ट्रेन. बहुत सारे बैक्टीरियाज के अंदर ये है एक प्लाज्मिड का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. बाद में कोई और प्लाज्मिड बैक्टीरिया में आता है, उसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. फिर कोई तीसरा प्लाज्मिड आता है, उसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से अगेंस्ट पेनिसिलिन, अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन, अगेंस्ट एम्पिसिलिन. तो ऐसे मल्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन बनाए जाते हैं. एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरिया एंड ट्रांसपोजोन्स. मल्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स बन रहे आजकल. सुना है टीबी के अगेंस्ट बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इन ट्यूबरक्यूलोसिस वी आर हैविंग मल्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स डेवलपिंग. And in primates, including humans, some sequences of interspersed repetitive DNA are present, and these transposons in humans are called ALU sequences, which are 300 base pairs. So, हमारे DNA के अंदर we have about 300 base pairs के repetitive units, which are called as ALU units. ALU units are repetitive, and these are called as ALU sequences, which are the transposons. तो सर ये एक ALU कॉपी एंड पेस्ट करके दूसरा ALU बना देगा,
कॉपी एंड पेस्ट करके तीसरा ALU बना रहेगा, और इसके अंदर ATGC GC GC, तो यहां पर भी ATGC GC GC, तो यहां पर भी ATGC GC GC। तो ये सीक्वेंसेस सबकी सेम है and are called as ALU sequences, repetitive sequences, transposons. So these were transposons, and then we have plasmids. Plasmids are small, extra chromosomal, double stranded circular forms of DNA that replicate autonomously. Plasmids generally bacteria में मिलते हैं, तो ये है बैक्टीरियल डीएनए और ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड circular forms of DNA, and they are capable of self replication. They replicate autonomously, and plasmids are not required for survival of the bacteria. तो बैक्टीरिया में ये है मेन डीएनए which is attached to cell membrane, and this DNA is called as a nucleoid. ये मेन है। Plasmids are extracircular DNAs. They are not required for the survival. Plasmids can be removed out of the bacteria and the bacteria will survive because this is the main DNA. तो ये main DNA है। And plasmids are naturally found in bacteria, yeast, and occasionally in plant and animal cell. Mainly bacteria और yeast में होता है। The term plasmid was first introduced by the American molecular biologist Joshua Lederberg in 1952. It can be 1 to 1,000 kilo base pairs. 1 to 1,000 kilo base pair, 1,000 base pairs is called as 1 kilo base. 1,000 base pairs is called 1 kilo base. तो एक प्लाज्मिड 1,000 बेस पेयर्स का हो सकता है, से 1,000 किलो बेस पेयर्स का हो सकता है। Plasmids are transferable genetic elements or replicons capable of autonomous replication within a suitable host. So they can be transferred from one bacteria to the other, and because they are capable of autonomous replication, self-replication, they are called replicons. Plasmids and bacteria carry genes related to metabolic activity and allow the carrier bacterium to survive and reproduce under unfavorable condition. प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में होता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और कैरियर बैक्टीरियम कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया के अंदर होता है, उसमें जीन्स है जो एंजाइम्स बनाते हैं जो बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सरवाइव करने के लिए मेटाबॉलिज्म करते हैं। So they help in metabolism to produce enzymes capable of allowing the bacteria to survive and reproduce under unfavorable condition. But plasmids make limitations है। Plasmids cannot accommodate long DNA fragments. समझो आपको DNA recombinant टेक्नोलॉजी करना है और आपने ये प्लाज्मिड में डाल दिया जीन फॉर इंसुलिन, जो अभी अभी हमने डिस्क्राइब किया था। तो एक जीन डालना है टू फॉर्म चाइमेरिक डीएनए तो बराबर है, बट अगर आपको मल्टीपल जीन्स डालने हैं, इफ यू वांट टू क्लोन लॉट्स ऑफ जीन्स टुगेदर, देन प्लाज्मिड्स कैन नॉट अकोमोडेट लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट्स, तो फिर कॉस्मिड्स बनाने पड़ेंगे। And cosmids are plasmids having fragments of lambda phage vector. तो जो नेक्स्ट करेंगे बैक्टीरियोफाज के सेगमेंट्स होते हैं, बैक्टीरियोफाज सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज कॉस्मिड्स।
And it is a common practice to designate plasmid by a lowercase number, capital P, followed by a rather small p bolte hai, followed by first letter or letter of researchers' names and a numerical number given by the workers. Thus, PBR 322 is a plasmid discovered by Bolivar and Rodriguez, who designated as 322. So, sir, what is the plasmid named as? Pehle small p, which is for the word plasmid. The first few letters are the names of the researchers. So that is BR, because the plasmid was discovered by Bolivar and Rodriguez. So BR. And a numerical number given by the workers, because Bolivar and Rodriguez gave it as 322. This is called P plasmid, BR Bolivar Rodriguez, and 322 number given by the scientists. And this plasmid, PBR 322, is the first artificial plasmid made and the most important plasmid which is used for DNA recombinant technology. तो ये सबसे कॉमन प्लाज्मिड है PBR 322. Some plasmids are given names of the places where they were discovered. For example, PUC is a plasmid from the University of California. University of California से ये plasmid PUC आया गया है. So these are plasmids. And then we have bacteriophages. A bacteriophage, phagine, is a virus that infects bacteria. And its short form is a phage. So it's a virus which infects bacteria. Such viruses which infect bacteria are called bacteriophage or phage. Typically, a bacteriophage consists of an outer protein capsid enclosing the genetic material. तो चलो एक बैक्टीरियोफाज दिखता क्या है? It has got an outer protein capsid or a capsule which has in it the genetic material, and then it has got a plate and it has got a tail sheath, and this is the neck which is the plate. तो ये हो गया head, ये हो गया neck, ये हो गया tail sheath, and then we have something called as the basal plate. और ये हो गया basal plate और ये हो गए tail fibers. So these are your tail fibers. So this is a bacteriophage. The head is the main part which is also called as the capsid. और उसके अंदर होता है genetic material, then the neck, the tail sheath, the basal plate, and the tail fibers. The capsid encloses in it the genetic material. The genetic material can be SS or DS. SS single stranded, DS double stranded. The genetic material can be single stranded RNA or double stranded RNA or single stranded DNA और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो चारों टाइप के जेनेटिक मटेरियल है. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, double stranded DNA. All four types of genetic materials are present and they can be circular or linear. तो ये circular भी हो सकता है और ये linear भी हो सकता है. Linear भी हो सकता है या ये circular भी हो सकता है. So any type of genetic material. Bacteriophages are much smaller than the bacteria that they destroy. And cloning of single genes is best carried out by a plasmid. एक ही जीन क्लोन करना है तो प्लाज्मिड यूज करते हैं. And for cloning of larger pieces of DNA,
फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग जीन लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन, तो जब ज्यादा लंबा डीएनए यूज करना है, नॉट ओनली जीन फॉर इंसुलिन, तो जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन, जीन फॉर प्रोलैक्टिन, जीन फॉर एल्डोस्टेरॉन, ये ऐसे मल्टीपल जीन्स एक साथ क्लोन करने हैं, then plasmids are not suitable as large inserts increase the plasmid size, making the transformation inefficient. प्लाज्मिड के अंदर एक जीन डालोगे तो वो होल्ड कर सकता है, मल्टीपल जीन्स डालोगे तो प्लाज्मिड इनएफिशिएंट हो जाएगा. इट कैनॉट होल्ड मल्टीपल जीन्स. And then M13 and lambda phage are accommodative of larger DNA molecule. For larger DNA molecule to be injected in host bacterial cell, bacteriophages like M13 and lambda phage are used. M13 और lambda phage are used और उसको E. coli में multiply करते हैं. Now, what is the lambda phage? DNA of lambda phages 48.5 किलो बेस पेयर. तो ये 48.5 किलो बेस पेयर्स, 48.5 into 1000 base pairs are present in the DNA of lambda phage. It has got cos sites of 12 base pair at the ends, and the cos cohesive site allow the DNA to be circularized in the host cell. तो सर ये है लैम्बडा फाज, उसके अंदर 12 बेस पेयर्स के cos sites होते हैं. So these are cos sites, and cos sites are able to make the lambda phage become circular. तो वो स्टिक हो जाएंगे. तो कॉसाइट्स यहां और यहां कॉसाइट्स चिपक जाते हैं, एंड दे अलाउ द लैम्बडा phage to be circularized. And cloning of large DNA fragment up to 20 kilo base pairs, DNA of phage is removed and replaced by DNA with desired gene. तो ये है लैम्बडा phage. उसके अंदर एक बड़ा सा चांग कट करके रिमूव किया जाता है, एंड डिजायर्ड डीएनए up to 20 kilo base pairs, which has gene for insulin, gene for growth hormone, gene for glucagon, gene for aldosterone, gene for multiple genes, उसको इस साइट के अंदर पैक किया जाता है. तो ये है लैम्बडा फाज, ये है लैम्बडा फाज, और ये है डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट. डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, ये इतना बड़ा सेगमेंट इसके अंदर अकोमोडेट हो जाता है. And this is called recombinant DNA, which is packed with the viral bacteria particles in vitro and are allowed to infect bacterial cells cultured on agar. तो अगार के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल के वायरल पार्टिकल्स के साथ डाल दिया जाता है. Once inside the bacterial cell, the recombinant viral DNA starts replicating all the genes needed for replication, and the normal lytic cycle takes place present in the DNA, and cycles of cell lysis and release viruses infect surrounding bacterial cells, and plaques of lysed bacterial cell or lawn of bacterial cell आते हैं. Cloned DNA are recovered from the viruses. अब ये last few points आपको समझ में नहीं आ रहेंगे. Sir, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, एक बार रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वायरल पार्टिकल्स के साथ डाल दिया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वायरल पार्टिकल्स के साथ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने देते हैं, और एक नॉर्मल लाइटिक साइकिल इंट्रोड्यूस की जाती है. व्हाट इज द लाइटिक साइकिल? चेक दिस हियर. सर ये है बैक्टीरिया और ये है बैक्टीरियोफाज, एंड नॉर्मली बैक्टीरिया के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, एंड बैक्टीरियोफाज के टेल फाइबर्स उन रिसेप्टर्स को जज करते हैं, एंड
एक रैंडम अटैचमेंट होता है उन रिसेप्टर्स के साथ। तो रिसेप्टर्स पे टेल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, रिसेप्टर्स पे टेल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। And then we have the what will happen next? Sir, एक बार receptors पे tail fibers attach हो गए, then the bacteriophage attaches to it, tail fibers contract होते हैं, tail fibers contract होते हैं और ये tail sheath with basal plate sharp होती है और शार्प बेसल प्लेट टेल शीट के साथ एक होल बनाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एक होल बनाते हैं और टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है, टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही द टेल शीट विल इंसर्ट itself with the basal plate into the bacteria. So once again, with receptors, the bacteria tail sheath or tail fibers attach to the bacterial cell, and then the tail sheath contracts, and the basal plate makes a hole in the bacteria और कॉन्ट्रैक्टेड टेल शीथ के अंदर से ये टेल शीथ बैक्टीरिया के अंदर जाती है and from the capsid the genetic material enters into the bacteria. तो इसे penetration of the bacteria कहते हैं। Once the bacterial DNA penetrates inside, तो ये है bacterial DNA, ये penetrate करता है, it will cause degradation of the bacterial DNA. बैक्टीरियल डीएनए डिग्रेड हो जाएगा and the bacteriophage DNA becomes dominant over the bacterial DNA and it will form new bacteriophage DNAs. तो bacteriophage के नए नए DNAs बनते हैं with the help of the viral DNA, bacteriophage DNA. उससे डॉटर बैक्टीरियोफाज डीएनएस बनते हैं एंड फॉर द वायरल डीएनए टू फॉर्म न्यू डॉटर डीएनएस द बैक्टीरियल डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड। तो ये है बैक्टीरियोफाज डीएनए, ये है बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए डिसइंटीग्रेट होता है और उसके न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से नए नए बैक्टीरियोफाज डीएनए बनते हैं। तो ये है फाज डीएनए और ये बनते हैं बाय द डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। तो बैक्टीरियल डीएनए का डिग्रेडेशन होता है एंड फाज डीएनए बनते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए एंड फाज डीएनए बनते हैं। तो bacteriophage will now replicate, phage DNA replicates using bacterial DNA. तो पूरा bacterial DNA disintegrate हो गया and you got phage DNAs और ये phage DNAs है। Phage DNA will then undergo transcription and translation. उसके एक सेगमेंट से बनेगा टेल फाइबर्स, एक दूसरे सेगमेंट से बनेगा बेसल प्लेट, एक तीसरे फ्रेगमेंट से बनेगा टेल शीट, एक चौथे फ्रेगमेंट से नेक और एक फ्रेगमेंट से बनेगा हेड। तो हर एक फ्रैगमेंट के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से बनते हैं न्यू डॉटर बैक्टीरियोफाजेस। तो हर एक डीएनए से बनता है न्यू डॉटर बैक्टीरियोफाजेस। तो हर एक डीएनए से बनता है न्यू डॉटर बैक्टीरियोफाजेस एंड न्यू डॉटर बैक्टीरियोफाजेस के अंदर सबसे पहले बनती है, तो ये है डीएनए, ये है बैक्टीरियोफाज बन गया।
ये है डीएनए, ये बैक्टीरियोफाज बन गया. And these daughter bacteriophages are called as virions. तो डॉटर बैक्टीरियोफाजेस को विरियॉन्स कहते हैं. सबसे पहले ये डीएनए से बनता है टेल फाइबर्स, फिर डीएनए से बनता है बेसल प्लेट, फिर डीएनए से बनता है टेल शीट, फिर डीएनए से बनता है नेक्स, और सबसे लास्ट बनते हैं कैप्सिड्स. और कैप्सिड्स बनते हैं, उसके अंदर ये बैक्टीरियोफाज डीएनए चला जाता है, और कैप्सिड नाउ अटैचेस टू द बेसल प्लेट एंड द नेक and tail sheath and basal plate and bacteriophage tail fibers. तो सबसे पहले डीएनए से रेप्लिकेट होके बनता है बैक्टीरियोफाज का बॉडी, और बाद में एक सेगमेंट से बनता है उसका हेड. हेड के अंदर बैक्टीरियोफाज डीएनए चला जाता है एंड इट फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट डॉटर बैक्टीरियोफाज which is now a daughter bacteriophage called as a virion. तो इस तरह से विरियॉन्स बन जाते हैं. तो यहां असेंबली ऑफ विरियॉन्स, उसमें बैक्टीरियोफाज भी है, उसमें उसका डीएनए भी है. यह है डॉटर बैक्टीरियोफाजेस, और उसके अंदर उसका डीएनए भी है. And it will give out an enzyme called as endolysine. Endolysine breaks down the bacterial wall. तो एंडोलाइसिन बैक्टीरियल वॉल को तोड़ देता है, and daughter bacteriophages are liberated. तो डॉटर बैक्टीरियोफाज लिबरेट किए जाते हैं, and each daughter bacteriophage will attach to a new bacteria. And we'll revise again. The attachment is done by receptors. Tail fibers will contract. The tail sheath will make a hole in the bacteria and pass its genetic material inside. Once the genetic material is passed inside, उसके ऊपर ये बैक्टीरियोफाज का हेड और कैप्सिड रह जाता है. इट विल फॉल ऑफ, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, उसे घोस्ट कहते हैं, वो घोस्ट गिर जाता है. एंड इन द बैक्टीरिया यू हैव बैक्टीरियोफाज डीएनए and you have bacterial DNA. Bacterial DNA disintegrate हो जाता है and forms daughter bacteriophage DNAs. Phage DNAs undergo transcription translation to form new tail fibers, new basal plates, new tail sheets, new necks, and new capsids. और कैप्सिड्स के अंदर फाज डीएनए चला जाता है, एंड उसके नीचे नेक, टेल शीथ, बेसल प्लेट, टेल फाइबर्स कंस्ट्रक्ट होते हैं. दीज आर डॉटर बैक्टीरियोफाजेस कॉल्ड एज विरियॉन्स व्हिच असेंबल. तो ये विरियॉन्स असेंबल हो जाते हैं, एंड दिस इज द bacteria with virion. It gives out endolysine, which will rupture the bacteria, and daughter bacteriophages are liberated. So, sir, this is called as a lytic cycle, which takes about 15 minutes to complete. तो ये लाइटिक साइकिल होती है, एंड 15 मिनट के अंदर ये लाइटिक साइकिल खत्म होती है. What did we do? Sir, we put in the bacteriophage DNA our genes. So, gene for insulin is put inside. Gene for glucagon is put inside. तो ये अलग अलग जीन्स हमने डाल दिए बैक्टीरियोफाज डीएनए के अंदर. And once the bacteriophage DNA penetrates into the bacterial DNA, then sir, ये है bacteriophage DNA,
it will disintegrate the bacterial DNA. Bacterial DNA disintegrate hoga and will form daughter DNAs and form daughter DNAs and daughter DNAs के साथ साथ gene for insulin, gene for glucagon, gene for insulin, gene for glucagon, gene for insulin, gene for glucagon. Say along with the gene for growth hormone, gene for growth hormone, gene for growth hormone. तो ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये तीनों तीन बैक्टीरियोफाज डीएनए के साथ ये जीन्स मल्टीप्लाई होते हैं एंड व्हेन दे अंडरगो ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में टेल फाइबर बनता है, ये है बैक्टीरियोफाज डीएनए विथ जीन फॉर इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन एंड इस सेगमेंट से बनता है टेल फाइबर। फिर इस सेगमेंट से बनता है बेसल प्लेट, इस सेगमेंट से बनता है टेल शीट, इस सेगमेंट से बनेगा नेक और इस सेगमेंट से बनेगा हेड। बट बीच में हमारे सेगमेंट से बन जाएगा बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन, ये सब भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से बन जाता है। तो along with the bacteriophage DNA which has replicated our genes for insulin, glucagon, growth hormone have produced these proteins, and then the bacteriophage will rupture the cell using endolysin. तो ruptured bacteria के अंदर you will have amino acid chains, insulin, glucagon, growth hormone, ये सब बैक्टीरिया के अंदर ही रह जाता है and this will be collected from the dead bacteria and this is a beautiful logic। हम लोग बैक्टीरियोफाज डीएनए को मल्टीप्लाई कराते हैं, फाज डीएनए के साथ साथ हम लोग हमारे जीन्स को मल्टीप्लाई कराते हैं एंड बैक्टीरियोफाज का डॉटर बैक्टीरियोफाजेस बनाते बनाते हम लोग इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन एक्सेट्रा बैक्टीरिया के अंदर बना देते हैं और वायरसेस की मदद से हम लोग ह्यूमन प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करवा देते हैं एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल लॉजिक, द यूज ऑफ बैक्टीरियोफाजेस as the producers of proteins required for humans। तो ये प्लाज्मिड से भी यूज कर सकते हैं और ये बैक्टीरियोफाजेस से भी यूज कर सकते हैं। ब्यूटिफुली डन। तो चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ बैक्टीरियोफाजेस।